Hello everyone, welcome to JC Academy. In today's class, we are going to discuss a very important and repeated topic of research aptitude, which is the different types of research. In December 2025, if you have gone through the question papers, you will see a lot of questions from this topic. They have come in match the following format. There were direct questions, there were fill in the blanks, there were assertion reason questions based on research and its types. So this is a very important class. Please watch it till the end, and wherever you feel like making notes, do add pointers to your existing notes. I am your educator for paper 1, Aradhana, and if you are new to the channel and you have not subscribed it, do subscribe JC Academy for all these benefits. Also, these are the stars of JC Academy who have cleared their management December 2025 attempt, and if you want to be the next one, so JC Academy is offering a complete foundation course for paper 1 and paper 2 management with multiple validity options. Also, complete foundation course for paper 2 management is available on the website. This is the number. If you have any doubt, you can call on the given number or you can visit the official website. Also, paper 1 foundation course is available. Currently, scholarship offer is going on. If you are using the code GIFT50, you will get a flat 50% off on UGC Net paper 1 course. For any query, you can call on the number or you can visit the official website. Now today, we are going to discuss the research and its characteristics and the various types of research in detail. Now starting with research. What is a research? So it is a systematic investigation to search for knowledge and answers to a question or a problem. Research means searching again and again. हमें कोई चीज पता है और हम किसी चीज का आंसर जानना चाहते हैं. So it is a journey from known to unknown. That is research. So it is a systematic collection and analysis of information. We observe and we experiment, and it is a critical and objective thinking process. Characteristics: it is directed towards solving the problems. It requires expertise. It develops generalizations, principles, or theories. Then it is based on experience or empirical evidences. It involves the collection of data. It is characterized by carefully designing the procedures and rigorous analysis. It aims to be objective and logical in approach, and it is carefully recorded and collected. Now, these are the various ways by which we can categorize our research. By purpose, it can be theoretical or applied. By depth of the scope, exploratory, descriptive, explanatory, or correlational. By the type of data, it can be qualitative, quantitative, or mixed. By variable manipulation, it can be experimental, non-experimental, or quasi-experimental. By inference, it can be deductive, inductive, or hypothetical deductive. By time period, it can be longitudinal or cross-sectional. By information source, it can be primary or secondary research. By data collection method, it can be documentary, field, laboratory, or mixed. So, in the coming slides, we are going to discuss all these research one by one. First is the theoretical research. It is also known as basic, fundamental, or pure research. You should be knowing the alternative names as well. It focuses on generating the knowledge for its own sake without immediate concern for practical application. So theoretical, it only focuses on expanding the base, expanding the foundation knowledge. So the goal is to expand the understanding, develop new theories, or refine the existing ones. It does not believe in the practical applications, but rather just expanding the knowledge base. Theoretical research often lays the groundwork that applied research later builds upon. So the foundation, the basic foundation of theory is laid down by theoretical research or basic research. For example, a PhD student in philosophy might conduct theoretical research exploring the new frameworks to understand consciousness, drawing on the existing literature and logical analysis rather than empirically collecting the data. Next is applied research. So applied research aims to solve specific practical problems. It uses theory-driven knowledge to address the real-world challenges. So applied research is specific and practical, and the foundation is laid by basic research.
So applied research has two main subdivisions. First is the technological applied research, where the efficiency in productive sectors like for processes, tools or machinery is done. Then scientific applied research, where the variables to predict the behavior, often used for consumer research. They are often manipulated. Variables are often manipulated to see the behavior of the consumers. So that is scientific applied research. For example, a biomedical engineering PhD might develop and test a prosthetic device applying the principles from material sciences and biomechanics to solve a problem. Now we have different types of applied research. The first is evaluation research. So evaluation research assesses the effectiveness of the programs or policies. For example, analyzing the impact of training program on employee performance. So to determine whether an initiative, that is the initiative of training given to the employees, whether the goals which have been set, that is the performance of employees, whether it is achieved or not, that is evaluation research. Then developmental research, it focuses on creating or improving the product, system or process. For example, designing a new app to enhance online learning experiences. So the purpose is to innovate and improve the functionality or of efficiency to learn online. Then we have action research. Action research involves collaboration with stakeholders to solve immediate problems. This is the key word, to solve immediate problems like a school. Immediate problems but local level. Also local level problems. For example, a school implementing new teaching methods and evaluating their impact on student engagement. So to implement and refine the solutions in real time. This is the action research, and we have a cycle of action research, that is plan, then we act, then we observe that what we have intended as an outcome, are we achieving it or not, and then we reflect. We, based on the feedback provided, we reflect back on what we have planned. So this is a continuous cycle for action research. This is for action research. Next is exploratory research. Exploratory research is a preliminary investigation into a topic that is not yet well understood. So any topic which you have not understood very well, so for that exploratory research is done. So explore करना, you are exploring it, you are diving into that topic ताकि आपको उस topic के बारे में ज़्यादा पता चल सके. You can have an in-depth knowledge about that topic. So it establishes reference frames, identifies the variables and generate the hypothesis for deeper study. Exploratory research tends to rely more on observing the patterns in the data rather than testing the theory. So this type is common at early stages of PhD, particularly when you are defining the scope and delimitations of your project. So it helps to explore a topic, get the basic idea and find possible or directions for further study. The main objective is to understand the problem clearly, to find new insights and new ideas, to identify the important variables or the factors which are related to that topic, to develop the hypothesis for future research. The key features: flexible and open-ended. It is flexible, it is not close-ended, it is open-ended. Open-ended means it is unstructured. You can say it is unstructured. Then it does not provide a final answer. It focuses on exploration and discovery, and it often uses qualitative methods. Next, we have feasibility research. So feasibility research is done to check whether a research project is possible and practical to carry out. आपने कोई ऐसा टॉपिक लिया रिसर्च के लिए जो feasible ही नहीं है, या फिर उसके पार्टिसिपेंट्स ही अवेलेबल नहीं है, या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आप जो टॉपिक ले रहे हैं it should be feasible enough to carry out in a real life situation. So it helps the researcher decide, can this study actually be done? It is a type of research conducted to evaluate the practicality, resources, time, cost and scope of the study. क्योंकि ये सब चीजें आपकी जाती हैं जब आप रिसर्च करते हैं. आपके बहुत सारे रिसोर्सेज, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपका पैसा, हर एक चीज मैटर करता है. So it aims to see whether the project is realistic and workable. It also helps to identify the possible problems or limitations. Next we have is descriptive research.
So descriptive research, it documents the characteristics of a phenomena without investigating why it occurs. So it answers the questions relating to what, describing the nature of demographics under study, and it does not focus on why. वो why पे focus नहीं करता है, वो सिर्फ what पे focus करता है. So it describes the attributes of the variables in the study without changing them. Descriptive research is generally used to analyze the background of the problem and obtain insights which are required for further study. तो उस फिनोमिना से या उस प्रॉब्लम से बैकग्राउंड स्टडी या उस प्रॉब्लम की डेमोग्राफिक्स से कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिलेटेड हैं, वो जो फैक्टर्स हैं या वो जो एट्रीब्यूट हैं, वो हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बताता है. Explanatory research, also called causal research, is one of the most common types of research. It establishes the cause and effect relationships which allow the findings to be generalized to similar realities. जब हम सैंपल पर कुछ डेटा सैंपल से हमने कुछ डेटा लिया और हमने वहां से जो रिजल्ट्स निकाले, if we are able to apply those results to a population, वो क्या है, ये हमारी explanatory research. It builds on descriptive research by adding the controlled variables. So explanatory research describes why certain phenomena works the way do. तो जो हमारा डिस्क्रिप्टिव था वो व्हाट बताता था, लेकिन जो वाई है वो कौन बताता है, हमारा एक्सप्लेनेटरी. इट एक्सप्लेन्स द फिनोमेना. So it answers the why questions by connecting different ideas and establishing cause and effect relationship between them. Most studies begin with exploratory. You start exploring it, देन यू डिस्क्राइब इट कि हाँ ये फैक्टर्स हैं इससे रिलेटेड, तो शायद ये फिनोमेना इस वजह से हो सकता है, एंड देन यू गो विद एक्सप्लेनेटरी. सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिफाइंस द प्रॉब्लम in detail. Explanatory research elaborates on how those different parameters, से कोई एक टॉपिक है या कोई एक प्रॉब्लम है, उससे ये सारे फैक्टर्स रिलेटेड है. लेट्स से एक्स वाई जेड एंड बी, ये सब फैक्टर्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, लेकिन ये सारे फैक्टर्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं, जो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो कौन बताएगा, एक्सप्लेनेटरी. बट एक्स वाई जी और बी ये फैक्टर्स हैं, ये कौन बताएगा हमें, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. Next is correlational research. So it identifies the relationship between two or more variables, examining how change in one element is associated with the change in other variable. Correlation, कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो एक वेरिएबल के बढ़ने से या कम होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हमें क्या बताता है, कौन बताता है, कोरिलेशनल रिसर्च. इट इज इंपॉर्टेंट दैट कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, इट जस्ट रिवील्स एसोसिएशन. वो कॉजेशन नहीं बता रहा कि इसकी वजह से ये हो रहा है, वो सिर्फ एसोसिएट करके बता रहा है कि दो वेरिएबल्स एसोसिएटेड हैं. अब हमारे टाइप्स ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च कॉन्सेप्ट है. सबसे पहला पॉजिटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव मतलब कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है. जैसे अगर हम एक्सरसाइज करेंगे रेगुलर इंटरवल पे तो हमारा फिटनेस लेवल ठीक रहेगा. सो बोथ आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन. नेगेटिव, अगर एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है. जैसे अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो हमारा जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगा, या फिर जो हमारा वर्क एंगेजमेंट है वो कम हो जाएगा. तो एक एरो ऊपर जा रहा है, एक एरो नीचे जा रहा है, यानी ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन. नो कोरिलेशन, क्या आपके शू साइज और आपके इंटेलिजेंस में कोई मतलब कोरिलेशन है कि जिसका पैर छोटा है वो कम इंटेलिजेंट है, जिसका पैर बड़ा है साइज पैर का वो मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो देयर इज नो कोरिलेशन, दैट इज जीरो कोरिलेशन. देन लीनियर कोरिलेशन, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है कि अगर आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे तो आपका जो एग्जाम का परफॉर्मेंस है वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा. नॉन लीनियर, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, they either follow a curved or a non-linear path. So this is curvilinear or non-linear correlation. Next we have qualitative research. So qualitative research, it involves collecting and analyzing the non-numerical data. So qualitative क्या होते हैं, non-numerical, जैसे text, audio या फिर video, to understand the concepts, opinions or experiences. It can be used to gather an in-depth insight into a problem or generate the new ideas. Now, there are different approaches to qualitative research. Qualitative research is used to understand how people experience the real world. अगर आपको measure करना है
कि कोई इंडिविजुअल कितना खुश है, तो क्या आप उसको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं? कैन यू मेजर इट न्यूमेरिकली, लाइक ही इज हैप्पी 5 on 10 और ही इज 10 on 10 हैप्पी? आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आप क्या बोलेंगे? ही इज वेरी हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज न्यूट्रल, मतलब कुछ ऐसे आप वर्ड्स उसको डिफाइन करेंगे। तो ये क्या आता है? हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च, जहां पर आप कुछ वेरिएबल्स को, कुछ कंस्ट्रक्ट्स को न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हैं। Now, the different approaches are, the first is grounded theory. So, the researcher collects the data on the topic of interest and develop the theory inductively. Then we have ethnography. Ethnography is related to the culture where the researcher, they immerse himself in the group or the organization to understand them better. Third is action research, that is the researcher and participants collaborate. They link theory to the practice, that is to solve the local level problems. Fourth is phenomenological approach or research. The researchers investigate a phenomena or event by describing and interpreting a particular lived experience. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे होली का फेस्टिवल गया, ठीक है, तो हम जैसे बोलते हैं ब्रज की होली, तो अगर कोई, इफ एनी पर्सन वॉन्ट्स टू राइट समथिंग, इट इज अ फिनोमिना, ठीक है, मतलब वो पूरे इंडिया में बहुत फेमस है ब्रज की होली, तो वो वहां पे जाके उस फिनोमिना को या उस इवेंट को, या फिर कोई मेला लगा है, कुंभ का मेला, ठीक है, कुछ ऐसे इवेंट्स को इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इट, तो आप वहां पे जाके आपने वो जो एक्सपीरियंस है वो जिया है, यू हैव लिव्ड दैट एक्सपीरियंस एंड नाउ यू वांट टू डिस्क्राइब दैट इवेंट, दैट इज अ फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज का एग्जाम्पल दिया है आपको। देन इज नरेटिव रिसर्च. So researchers examine how stories are told to understand how participants perceive and make sense of their experiences. So these are the various qualitative research approaches. Now these are the data analysis. How a qualitative data is analyzed. The first is content analysis. Content analysis to describe and categorize the common words, phrases and ideas in qualitative data. जब आप लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, आप किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर अगर इंटरव्यू ले रहे, पर्टिकुलर टॉपिक पे, फिनोमिना पे इंटरव्यू ले रहे, ऑब्वियसली देयर विल बी सर्टेन वर्ड्स जो रिपीट होते रहेंगे। तो वो हो गया कंटेंट एनालिसिस, जहाँ पे आप सेम जो वर्ड्स हैं या फिर जो सेम फ्रेजेस हैं, आप उनको एक कॉमन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। देन वी हैव थीमेटिक एनालिसिस. Thematic analysis to identify and interpret the patterns and themes. Then we have textual analysis, that is to examine the content, structure and design of the text. And fourth is discourse analysis, that is to study communication and how language is used to achieve the effects in specific context. Then we have quantitative research. Quantitative means collecting and analyzing the numerical data. It can be used to find the patterns and average, make predictions, test causal relationships, and generalize the results to wider population. Now, quantitative research can be used in descriptive research, like you simply seek an overall summary of your study variables. You're just describing the overall summary. Correlation, relationship between your study variables, and experimental, whether they variables, they are related to each other, there is a cause and effect relationship or not, that is experimental research. So experiment, that is the control or manipulation of independent variable. Then survey, that is you ask certain questions to a group of people over the phone or face to face. Then we have systematic observation, that is to identify a behavior or occurrence of interest and monitor in the natural settings without actually manipulating the environment. And the fourth is secondary research, that is collecting the data that has been gathered for other purpose. Now the data analysis in quantitative research, how when the data is collected, quantitative data, when it is collected, how we analyze the results. The first is descriptive statistics. So descriptive statistics summarize and organize the data. It provides basic information such as mean, mode, median, standard deviation and range. So common measures for descriptive statistics, we have mean, that is the average of all data points, median, which is the middle value, and standard deviation, that measures the variability around the mean, that how much the data points are scattered from the mean deviation, from the mean. So standard deviation measures that.
Then we have inferential statistics. So inferential statistics allow the researchers to make predictions about a population based on the sample data. So if you have collected data from the sample and you have tested it, you have applied certain tests and you came to a conclusion. So whether that data or whether that result can be applied to the population, that prediction or that inference is inferential statistics. So techniques include t-test, ANOVA and regression analysis. So t-test, it compares the mean of two different groups. ANOVA, it compares the mean among three or more groups. And regression analysis, it establishes the relationship between independent and dependent variable. Basically, it predicts the relationship. Then we have correlational analysis. So it measures the strength and direction of the relationship between the two variables. It is used to determine if change in one is associated with the change in other. We have two common measures: Pearson correlation, that is measuring the linear correlation, and Spearman rank correlation, it measures between the two ranked variables. So that is a correlation analysis. Then mixed method. Mixed method, it integrates both qualitative and quantitative research. So an approach that integrates both qualitative and quantitative to answer a research question or achieve a research objective. It is grounded in the idea that neither qualitative nor quantitative is sufficient alone to address complex research problems. So based on that, we have certain designs for mixed method. The first is convergent parallel design. So qualitative and quantitative data are collected and analyzed separately but simultaneously. That is convergent parallel. Then explanatory sequential design. It begins with the collection and analysis of quantitative data followed by qualitative. So the quantitative data is gathered first, followed by qualitative data. So this is explanatory sequential. Exploratory, the qualitative is collected first and the hypothesis is developed, followed by quantitative. So this is exploratory sequential design. Next we have is experimental research. So experimental research refers to the process of planning a study to test a hypothesis where variables are manipulated to observe the outcomes. By carefully controlling the conditions, researchers can determine whether a specific factors causes the change in dependent variables or not. So key characteristics: manipulation of variables is done, then extraneous factors are controlled, then there is randomization, that is to reduce the biasness, randomly assignment of groups is done, and then we have replication, that is if we are having two or three groups, each group should have similar results, that is replication. Now the types of experimental design. The first is pre-experimental design, that is these designs are exploratory and lack random assignment, often when strict control is not feasible, like one-shot case study, that is it observes the effect of an intervention on a single group without comparison to a control group. हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं तो वो देखता है एक सिंगल ग्रुप पे विदाउट कंपैरिजन, हम कंट्रोल ग्रुप को और जो हमारा ट्रीटमेंट वाला ग्रुप है हम उनको कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही ग्रुप पर जो इफेक्ट है हमारे इंटरवेंशन का वो देख रहे हैं, दैट इज वन शॉट केस. वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, इट मेजर्स अ ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर एन इंटरवेंशन. मतलब एक ग्रुप को पहले हमने मेजर किया, फिर हमने उनको कुछ इंटरवीन किया, ठीक है, जैसे हमने उनको कोई ड्रग दिया, हम जिसका टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर हम उसके बाद उसका इफेक्ट देख रहे हैं. सो दैट इज measuring that group before and after the intervention, that is pre-test and post-test. टेस्ट से पहले एंड टेस्ट के बाद. Then we have true experimental designs. So randomized control trials. So participants are assigned randomly to either experimental or control group. हमने randomly assign कर दिया and उसके बाद हम जो intervention है या जो हमने उनको drug दिया है हम वो चीज़ measure कर रहे हैं. Then post-test only control group design. It measures only the outcome after an intervention. Post-test यानी खाली टेस्ट के बाद, हमने टेस्ट से पहले या हमने वो ड्रग देने से पहले उनको मेजर नहीं किया, हमने उनको चेक नहीं किया, हमने सीधा उनको ड्रग दिया एंड देन हमने उनको फिर मेजर किया उस ग्रुप को, दैट इज पोस्ट टेस्ट ओनली, देयर इज नो प्री टेस्ट.
Then we have CASI experimental designs. So CASI experiments lack random assignment but still aim to determine causality by comparing groups or time periods. So the first is non-equivalent control group. Two groups are compared where participants are not randomly assigned using pre-test and post-test. ठीक है, हमने randomly नहीं उनको assign किया है. And this interrupted time series design जहाँ पे एक single group over a time before and after an intervention is measured. Then we have factorial designs. It tests the effect of multiple independent variables simultaneously. It is used for studying the interactions between the variables. टू वे फैक्टोरियल डिजाइन यानी जहाँ पे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का हम इंटरैक्शन देख रहे हैं, एंड थ्री वे फैक्टोरियल जहाँ पे तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का हम इंटरैक्शन दे रहे हैं, एंड इट वुड बी ऑब्वियसली मच मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. नाउ मेथड्स टू इम्प्लीमेंट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. द फर्स्ट इज रैंडमाइजेशन. रैंडमाइजेशन मतलब हमने रैंडमली लोगों को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में भेज दिया है to ensure that each participant has an equal chance of being assigned to any group, ताकि सिलेक्शन बायस को रिड्यूस कर सके. अगर हम चाहते हैं हमारे कुछ फेवरेट पर्सन है, ठीक है, फेवरेटिज्म को कम करने के लिए हमने रैंडमली असाइन कर दिया. देन ब्लाइंडिंग. सो पार्टिसिपेंट्स it prevents the participants or researchers from knowing which group participant belong to. अगर मुझे पता है कि मेरे पास मुझे कंट्रोल ग्रुप में भेजा गया है या मुझे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भेजा गया, ऑब्वियसली मेरा बिहेवियर चेंज होगा उसके हिसाब से. तो ब्लाइंडिंग का मतलब कि हमने पार्टिसिपेंट को नहीं बताया है कि वो जिस ग्रुप में है क्या वो कंट्रोल ग्रुप है या फिर वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है. देन वी हैव कंट्रोल ग्रुप्स. So it provides a baseline for comparison showing what would happen without the intervention. कंट्रोल ग्रुप्स में हम जो टेस्ट करना चाहते हैं वो हम नहीं करते हैं. जैसे होता है ना, मीठी गोली दे देते हैं उनको ड्रग के नाम पे, दैट इज कंट्रोल ग्रुप. बट जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है हम उनको एक्चुअल ड्रग देते हैं टू सी द रिजल्ट और टू सी द आउटकम. देन काउंटर बैलेंसिंग. इट कंट्रोल्स फॉर ऑर्डर इफेक्ट इन रिपीटेड मेजर डिजाइन बाय वेरिंग द ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट्स. यानी हर एक ऑर्डर पे जो हमारे ये हैं पार्टिसिपेंट्स हैं वो हर एक ऑर्डर में करेक्टली मेजर, मतलब उनका जो रिपीटेड मेजर है वो करेक्ट ऑर्डर में आ सके हर एक इफेक्ट के बाद, दैट इज काउंटर बैलेंसिंग. जैसे असाइन डिफरेंट सीक्वेंस टू पार्टिसिपेंट्स इंश्योरिंग दैट ईच कंडीशन अपीयर्स अक्रॉस ऑर्डर्स. हर एक कंडीशन हर एक लेवल या हर एक ऑर्डर के बाद आना ही आना चाहिए, दैट इज काउंटर बैलेंसिंग. Then we have replication, that is it ensures reliability by repeating the experiment or including multiple participants within the groups. कि हमने जो एक ग्रुप के ऊपर हमने अप्लाई किया है, जो रिजल्ट आया है क्या वो बाकी ग्रुप्स पे भी रेप्लिकेबल है या नहीं है, तो वो क्या है, रेप्लिकेशन. फिर आता है हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. So non-experimental or observational research analysis phenomena in their natural context without any direct researcher intervention. The focus is on measuring and describing the variables as they naturally occur. उसमें as a researcher हम कुछ भी intervene या manipulate नहीं कर सकते हैं. This approach is often used when manipulating the variables would be unethical or impractical. An epidemiology PhD student might study the relationship between air pollution level and respiratory diseases. ना आप एयर पोल्यूशन के लेवल में खुद से एज अ रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकते हैं और ना ही रेस्पिरेटरी डिजीज रेट्स के जो स्टैट्स हैं उसमें कुछ भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो इट इज एनवायरमेंटल एंड हेल्थ डेटा विदाउट एनी मैनिपुलेशन. देन वी हैव डिडक्टिव रिसर्च. इट स्टार्ट्स विद अ थ्योरी or hypothesis and works towards a specific observation to confirm or refuse it. The conclusions are logically valid if the premises are correct and the reasoning is sound. It is a top-down approach. Then we have inductive research. Inductive research works in the opposite direction, starting with specific observations and building a broader generalization, and it is a bottom-up approach. Then hypothetical deductive research. It combines the elements of both inductive and deductive. The researcher observes the phenomena, forms a hypothesis based on those observations, uses the deductions to derive the prediction, and then verifies or rejects the hypothesis. So this is hypothetical deductive research. So for example, if your laptop fails to switch on, you may consider a hypothesis that the battery is dead.
So you predict that laptop will work properly once the battery is replaced. So when you replace the battery, you conduct an experiment to test your prediction. आपने अपना लैपटॉप की बैटरी को रिप्लेस किया एंड वो चलना शुरू हो गया लैपटॉप, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी वो एक्सेप्ट हो गई. बट इफ द लैपटॉप स्टिल डजंट वर्क, योर hypothesis is disproved. Then we have longitudinal research. Longitudinal research is also called as diachronic research. It tracks the same subject or group or event over an extended period. The data is collected at multiple time points, allowing the researcher to observe the change, trend, and the development. So the researchers conduct many observations of the same subject over a period of time. Same group है, लेकिन time period change हो रहा है. Cross-sectional, also called synchronous research, it collects the data from a population at a single point in time. It provides a snapshot of a phenomena and is faster and less resource intensive. Since these studies capture a snapshot of a single moment, they may not provide a definite information. यानी हमने एक ही टाइम पे अलग अलग ग्रुप्स को ले लिया. जैसे हमने छोटे बच्चे भी ले लिए, ठीक है, छोटे बच्चे थे वो भी ले लिए, जो हमारे बड़े लोग थे, ठीक है, मतलब गर्ल्स और बॉयज, हमने वो भी ले लिए, और जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, ओल्डर एज के लोग थे, हमने वो भी ले लिए. तो हमने बच्चे भी लिए, हमने टीन्स भी ले लिए, और हमने एडल्ट्स भी ले लिए एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे. ये आ गया क्रॉस सेक्शनल. लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, हमने एक छोटा बच्चा लिया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो टीन बना, हमने उसी बच्चे को, उसी एक सिंगल चाइल्ड को जब वो टीन बना स्टडी किया, और जब वो अडल्ट बना हमने उसी बच्चे को स्टडी किया. दैट इज लॉन्गिट्यूडनल. यानी सब्जेक्ट हमारा सेम है, लेकिन जो हमारा टाइम पीरियड है वो वेरी कर रहा है. क्रॉस सेक्शनल में हमारा टाइम सेम है, लेकिन जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो अलग अलग है. Then primary research. Primary research collects original first-hand data directly from the sources. The researcher designs and conducts the data collection whether through experiment, survey, interviews or observation. Secondary research analyzes the data and information that has already been published. जैसे हमारे जो गवर्नमेंट के डेटा सेट्स होते हैं, या फिर हमारे कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, कुछ हमारी स्टडीज हैं, तो जो ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा है हम उसमें से अगर अपना रिसर्च का कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ सेकेंडरी रिसर्च. देन वी हैव डॉक्यूमेंट्री रिसर्च. Documentary research, it involves the systematic review of existing information resource. It is the foundation of literature review. Documents में से हम research कर रहे हैं, जो हमारा literature review हम उसमें से search कर रहे हैं, that is documentary research. So the researcher works with published text, archives, databases and digital records. Field research, जहाँ पर हम उस लोकेशन पे जाके उस पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए हम फील्ड से रिसर्च डायरेक्टली कलेक्ट करें, दैट इज द फील्ड रिसर्च. एंड लेबोरेटरी रिसर्च टेक्स प्लेस इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे रिसर्चर कैन आइसोलेट द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो मैनिपुलेट करके कुछ कंट्रोल्ड सेटिंग्स के अंदर अपना जो रिजल्ट है वो अचीव कर सकता है, दैट इज लेबोरेटरी रिसर्च. नाउ दिस इज अ क्विक समरी, ठीक है, जितने भी टाइप्स थे, theoretical, applied, exploratory, descriptive, explanatory, correlational, qualitative, quantitative, mixed, experimental, non-experimental, CASI, longitudinal and cross-sectional. मैंने सारे टाइप्स का आपको डेटा बता दिया है कि किस तरह का डेटा यूज होता है और वो किस चीज के लिए बेस्ट है. जैसे हमारा क्वालिटेटिव क्या है, फॉर मीनिंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा के लिए. हमारा एक्सपेरिमेंटल किसके लिए बेस्ट है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. थ्योरेटिकल, टू जनरेट न्यू थ्योरीज. अप्लाइड, टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. तो ऐसे करके मैंने आपको एक कंपैरिजन चार्ट बना के दे दिया है. आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो के कमेंट में अपना जो डाउट है उसको टाइप कर सकते हैं. And once again a quick reminder that JC Academy is offering all these courses ताकि आप अपना जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसको अच्छे मार्क्स के साथ अचीव कर सकें और जो आपका टारगेट है वो आप क्लियर कर सकें. ऑल्सो दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ JC Academy. अगर अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है तो प्लीज़ इनके साथ कनेक्ट हो जाइए टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड. एंड दिस इज अ पेपर 1 टेलीग्राम ग्रुप. अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए.
एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव लव्ड द क्लास. तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. सी यू सून. बाय बाय एंड टेक केयर.